अच्छा, तो आज 9 जनवरी कौन कौन सब करंट अफेयर्स अच्छी देखीदे टे खाली ओभरलुक करदे सर्टकट्रे बेसी टाइम नबार नहीं जिन गुड़ाक देन तुम आज देखा फास्ट तुम यूएस एक्जिस्ट कर 660 तुम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रू देन रशिया सैंक्शन 500% टैरिफ दवा थ्रेट कौन इंडिया आसी देखा तो फास्ट इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल्स एंड द 6th ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन तुम बिगिन इंडिया तुम फाइनेंशियल ईयर 26 रे जीडीपी प्रोजेक्शन 7.4% रखी and RBI the financial oversight in the Delhi and the legacy of the ecologist in the Madhav Gadgil तो Gadgil रिपोर्ट आसला से रिपोर्ट विषय आम देखा राइसना रासिना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव जोटा कि तुम न्यू दिल्ली रे स्टार्ट होती कौन देखिए सेटा एंड दैट इज योर ईयर ऑफ द रंगलैंड 2026 कौन देखा एंड ऑस्ट्रेलिया टीचेस द आस 4.1 41 कौन आम देखा फास्ट न्यूज आमर आसी कि यूएसए तुम 660टा ऑर्गेनाइजेशन लीव कर माने दैट इज ए मल्टीलैटरल रिट्रीट माने पछकु जीवा तो दैट इज ए मल्टीलैटरल रिट्रीट मीन्स यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज फॉर्मलाइज्ड द विड्रॉल फ्रॉम द 66 इंटरनेशनल बॉडीज इज मेकिंग ए हिस्टोरिक शिफ्ट टुवर्ड्स द आइसोलेशन आइसोलेशनिज्म माने कौन तुम जदि दुनिया ठार भी तुमको ये करके रखुच तुम जदि दुनिया पाखर भी निजक आइसोलेशन करके रखुच माने दुनिया ठू तुम संपर्क भांगुच ताको आइसोलेसिज्म कहती डायरेक्ट एक्जिस्ट फ्रॉम द नॉन क्रिटिकल अलायंस रु डायरेक्ट एक्जिस्ट हो जाती एंड रिलोकेशन ऑफ द फंडिंग ऑफ द डोमेस्टिक प्रोजेक्ट रिलोकेटिंग एंड डिसमेंटलिंग द डिकेट्स ऑफ द साइंटिफिक एंड द सोलर कोऑपरेशंस तो ये सब जिन चलती यूएसए रे तो एंड ऑफ द सोलर कोऑपरेशन माने तुम जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज को फाउंडेड बाय द इंडिया इज लूज इट्स मेजोरिटी इट्स मेजर वेस्टर्न फाइनेंशियल बॉर्डर्स एंड इंडिया फाइनेंस रेस्पॉन्स कौन थी तुम लीडरशिप शिफ्ट्स एंटायरली टू द न्यू दिल्ली एंड पेरिस टू द सस्टेन ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स विदाउट द यूएस एड तो यूएसए एठू सब निजर इम्पोर्टेंस बाहर करके नहीं जाइए तापर ग्लोबल सोलर ट्रांजिशन मीन्स द फिलिंग ऑफ द वैक्यूम माने यूएसए जो टाइम रे एग्जिस्ट करला चाइना यूरोप आर कंपीटिंग टू फिल द डिप्लोमेटिक एंड द टेक्नोलॉजिकल गैप इन द सोलर इंडस्ट्री दिस क्रिएट ए न्यू ग्रीन टेक कोल्ड वॉर जो कोल्ड वॉर तुम होता 1992 पाखापाखि बा 2 जाए तुम जो यूएसएसआर तापर जो तुम भांगिकी रशिया किछटा देश हो जाइए तो से भाया गोटे तुम ग्रीन टेक्र कोल्ड वॉर स्टार्ट हम बोली कहते यूएस एक्जिस्ट हो जाइए चाइना आउ यूरोप भितर चलते कंपटीशन द फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रेडिक्ट द 15% ड्रॉप इन द आईएसए प्रोजेक्ट फंडिंग फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2026 तो ये कहुच्छी कि तुम आईएसए प्रोजेक्ट जो फंडिंग आसूँ तुम यही क्वार्टर में तुम 15% ड्रॉप हो तो इकोनॉमिक वेलफेयर कौन हो तुम ये सेकेंडरी सैंक्शन लगी सेकेंडरी सैंक्शन मीन्स तुम सेकेंडरी सैंक्शन एक्ट देखा तुम रशिया सैंक्शन बिल आनी टार्गेटिंग द ट्रेड पार्टनर्स लाइक द इंडिया चाइना ब्राजिल हैज सेंट शॉक वेव थ्रू द ब्रिक्स ब्लॉक माने रशिया रो सैंक्शन बिल आज जाइए तो टार्गेटिंग द ट्रेड पार्टनर्स को टार्गेट कर क्या ना इंडिया चाइना और ब्राजिल को टारगेट्स द एनर्जी एंड द मिलिटरी इंपोर्ट restricts the US dollars settlement for the third party trades and heavy pressure on the India's S for 400 डिफेन्स डील को जो होता हेलिकप्टर डील तो से अधिका ये आसूँ तो जिनस लगे तुम फास्ट 500% टैरिफ टिके देन तुम 500% टैरिफ वाल कौन तुम एटा गोटे नुआ न्यूज आसी कि तुम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज थ्रेटेन्ड ए मैसिव 500% टैरिफ ऑन ऑल इंडियन गुड्स इफ द ट्रेड इम्बालांस आर नॉट एड्रेस बाय मार्च 2026 जदि ट्रेड इम्बालांस सब मार्च 2026 सुधा सॉर्ट आउट ना तो इंडिया उपर 500% तारीफ लगे कि ना आमर अमेरिका द की सेक्टर अफेक्टेड तुम किए टेक्सटाइल फार्मास्यूटिकल एंड द आईटी सर्विसेज द नेगोशिएशन इन द न्यू दिल्ली हैव इंटेंसिफाइड एज द इंडिया वेड बाय द रिटेलरी
मेजर्स तो ये सब जिन अच्छी मार्केट्र भोलाटिलिटी इंडेक्स केमती कौन सब चेंज होची तो VIX भोलाटिलिटी injects short the 3-year high following the tariff announcement is reflecting the global investor in anxiety. Okay, माने तांकर आगुरी प्रेशर बड़ी बड़ी जाउची. Then दलाल स्ट्रीट बियर रन मीन्स तुम सेंसेक्स रे आज सका 1200 पॉइंट ड्रॉप देखा मिली ट्रेड ऑन दी जनवरी 9 दि आईटी सेक्टर मैंने फेस कर हाबी जो हेवी सेल ऑफर से जो एबे तुम निफ्टी आईटी रे आईटी परफॉर्मेंस इंडेक्स एबे -4.2 को चली जाइए जेहेतु एत बड़ क्रैश आसी 1200 पॉइंट्स तो हाइड्रोजेन फ्यूचर कौन तो हाइड्रोजेन ट्रेन आम इंडिया रे लॉन्च होगा जाऊँगी ना इंडिया रेलवे हैज कमेंसमेंट द फास्ट कमर्शियल ट्रायल ऑफ द हाइड्रोजेन फ्यूल ट्रेन स्टार्टिंग ऑन द हेरिटेज ऑफ द कालका टू सिमला रूट रे ये सब जीव एंड ओनली द वाटर वेपर एथुर बाहर एज एमिशन स्पीड तंकर 150 किलोमीटर पर आवर रहिबो आउ इंडिजेनुअस फ्यूल सेल टेकेतरे यूज हेइचे. देन हाइड्रोजेन हेरिटेज आम इंडिया सब केमती चलती जीरो कार्बन ये आमको एम दब जोटा कि तुम 2070 सुधा आम टार्गेट रखा जाइए एंड एम्स टू रिप्लेस द डीजल बॉडीज डीजल लोकल्स ऑन द 8 सेंसिटिव माउंटेन रेलवे रूट्स. Then tech sovereignty, of course, developed a IRFC in the collaboration of the Indian startup. The tech sovereignty भी आमर आसुची and economic impact reduces the energy bill by the 35% compared to the diesel. Global leader अनुजाई the position as the India as the third nation with the hydrogen rail रे आम इंडिया बे third nation हेची आउ को दिटा देश छाड़ी. टेक्निकल मेजर जो माइलस्टोन आमर कौन अच्छी 1.5 मेगावाट आउटपुट माने the custom fuel cells are designed for a high altitude steep terrain efficiency ଆଉ 1000 किलोमीटर रेंज रिफ्यूलिंग टेक्स ए लेस देन 15 मिनिट भीतर ये रिफ्यूल हो एंड अलाउिंग द बैक टू बैक ऑपरेशन 1000 किलोमीटर रेंज जाए ये गोटे ये जाई पारी बो. क्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर कौन द नेटवर्क एक्सपांशन वाइज द मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे हैज allocated 25,000 कोटी for building the 50 green hydrogen hubs across the major railway junctions. This infrastructure will support not just the train but also the industrial heavy trucking. ताको भी से हेल्प करिवो 100% ग्रीन रेल आमर 2030 सुधा करियो को हमें टारगेट रखिछंती. देखिए टारगेट केते फेल होउछ. तमरा टाइगर सेंसस 2026 आस जाइए काउंटिंग द स्ट्राइप्स मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट माने अथॉरिटी जे अच्छी NTCA has launched the world's largest wildlife survey today. 50,000 प्लस कैमेरा ड्रॉप डिप्लॉयड होती AI पावर इंडिविजुअल रिकग्निशन लॉन्च होती एंड फोकसेस ऑन दी थांथाई पेरियर तमिलनाडु तुम अधिका फोकस दि जाइए. तो एमती तुम गोटे आसी काउंटिंग द स्ट्राइप्स केतटा तुम बाघ अच्छा सेंचुरी कौन तुम स्पॉटलाइट अच्छी तुम जो अच्छी थांथाई पेरियर जोटा कि तुम तमिलनाडु अच्छी आज द न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व इज पार्टिसिपेटिंग इन ए फुल स्केल सेंसस. द थांथाई पेरियर wildlife sanctuary is a crucial for the understanding the tiger corridor movements between the western and the eastern Ghat. Estimated the population of the 25 to 30 resident प्राय तमर एटी अच्छी जो मैंने तमर से वाइल्ड से कॉरिडोर तमर जीवा आसवा करती. Conservation of the technology eDNA sampling analyze the water sample to detect the presence without the visual contact. M Stripe app तमर रियल टाइम फील्ड डाटा साइनिंग सिंक फॉर द फॉरेस्ट रेंज अक्रॉस द 18 स्टेट रे तमर M Stripe भी लगा जाइए तुम रियल टाइम डाटा देखि पारिबो. एड्स AI द कैमेरा दैट फिल्टर्ड आउट आर फॉल्स ट्रिगर लाइक स्वाइंग ब्रांचेस माने हाँ ऑफकोर्स तुम जिनस जदि ये जो एड्स AI आसी ये तुम फॉल्स ट्रिगर भी हो जाए जदि कौन तुम लगिगला गछ पत्र ये भी तुम फॉल्स ट्रिगर भी हो जाए. तो ये सब जिनस तुम कंजर्वेशन अप्लाय होती. देन तुम इकोनॉमिक इंजिन कौन इंडिया ग्रोथ कर 7.4% GDP रे कौन एटा है सिस्टम ना द इकोनॉमिक पावर द इकोनॉमिक ग्रोथ पॉइंट रे तुम से लिखी 7.4% ग्रोथ हम डिस्पाइट ऑफ द ग्लोबल हेड वाइंड्स
The India's NSO projected to strong 7.4% of the real growth driven by the massive infrastructure spending and the high domestic consumption. আচ্ছা তোমার সেক্টরাল গ্ରୋଥ୍ তোমার କ'ଣ ରହୁଛି ତୁମେ ଯଦି କହିବ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂରେ ତୁମର 8.5%ର, ସର୍ଭିସେସ୍ରେ 7.8%ର, ଆଗ୍ରିକଲଚରରେ 3.5%ର, ଆଉ ତୁମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ 9.25%ର ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। The construction and the manufacturing load the surge and benefiting from the PLI 2.0 scheme. PLI means product link initiative scheme ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଏ ତୁମକୁ incentivize କରିବେ। And that is the driver resilience ମାନେ କ'ଣ? It is the consumption wise rising the middle class disposable income is fueling record breaking auto and the electronic sale. Infrastructure wise the government investment in the Gati Shakti project has a multiplier effect in 200 industries. Of course जदि मु रोड तुम बागे दूची माने ए रोड सहित कनेक्टेड थिबा सबु जांक इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिकली फलप्रद हेबे ताको ही तुम कह मल्टीप्लायर इफेक्ट्स। ओके जदि मु कोठी इन्वेस्टमेंट आनी से इन्वेस्टमेंट मते मल्टीप्लाई करी केतेटा इन्वेस्टमेंट दउची ताको ही मु कहबी गोटे इन्वेस्टमेंट रो मल्टीप्लायर इफेक्ट। ओके दैट इज फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मनी। RBI takes the overseat. The RBI Bank of the India has officially taken over the management of the public debt and the banking for the Delhi government. Koichi imposed the physical credibility, access to the lower interest SDLs and the streamlined budget execution ने तमरो ये ता तमरो RBI तरफ पूरे ऑफिशियली टोकन आसाइजी तमरो ए सब मैनेजमेंट ऊपर आपको टिके टिके सब चेक कर दो कौन कौन सब तमरो नो अपडेट आछि। स्टेट डेवलपमेंट लोन सो तुम SDL थिला स्टेट डेवलपमेंट लोन तुम मार्केट बोरिंग भी पार। दिल्ली कैन नाउ राइज द फंड डायरेक्टली फ्रॉम द ओपन मार्केट अंडर द RBI सुपरविजन। सोवरेनिटी कंफर्ट RBI ओवरसीट द प्रोवाइड लेंडर्स कॉन्फिडेंस एंड लोअरिंग द यील्ड ऑन द दिल्ली बॉन्ड्स। तुम प्रोजेक्ट फंडिंग द फंड्स आर द एन मार्क टू द दिल्ली मेट्रो फेज 4 एंड द EV इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन से सब फंड प्रोजेक्ट रे फंडिंग हम ये सब तुम डेवलपमेंट जो नुआ नुआ आसी दिल्ली तो ये सब जिन देखी दो। ट्रांसफॉर्मिंग द दिल्ली दिस रिफॉर्म अलाइंस द दिल्ली विथ द अदर मेजर स्टेट रिमूविंग इट्स रिलायंस on the Union Ministry of the Finance for small scale debt. It represents a significant step towards the financial autonomy for the national capital. एबे से जो आगुरु यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को ऊपर डिपेंडेंट होइकिथिले एबे से डायरेक्ट लोन उठेई पारिबे। टार्गेट 10,000 कोटी तमरो आसीबो SDLs फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026। देखियो ए फाइनेंशियल ईयर कोन होउछ। People ecologist the India mourns the passing of the Madhav Gadgil 82. It is the visionary scientist who balanced the development with the construction. ये डेवलपमेंट सहित कंस्ट्रक्शन को भी तुम सपोर्ट करचंती। आर्किटेक्ट ऑफ द WGEP रिपोर्ट एंड द पद्म भूषण अवार्ड भी आपको दिया जाइए। दैट इज द प्रायोनियर ऑफ द पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन। पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन मीन्स मो काम करने सहित मो परिवेश को कौ भाया मेंटेन करके चलती सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं चलुची से जो तुम ये न्यूज को आसुँच। तो गाडगिल रिपोर्ट वाइज तुम इकोलॉजी फास्ट हूँ एडवोकेटेड फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ द एंटायर वेस्टर्न घाट as an ecologically sensitive area. Of course, then citizen science कौन he believed that the local communities are the best custodian of their own environment and the biodiversity. Of course तुम जो टाइम रे लोकों को शामिल करूछ माने तांको द्वारा ही तो बनउछ तुम एनवायरनमेंट जेतल तुम लोकों को आवाज करे दो तो एनवायरनमेंट आस्ते आस्ते हिलवा को लागियो। A living legacy is the protecting the ghats. Of course, his work is continued to guide policy decisions regarding the landslide, water conservation, and the forest right in the India. His passing marks the end of an era in the Indian environmentalism. But his green blueprint remains a standard. Of course, India पे बहुत काम करचंदी तमरा इकोलॉजी को सस्टेन रखिया पाई। राइजिना साइंस इनिशिएटिव कौन एटा तम राइजिना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 has been launched today in the New Delhi Bridging Lab and the Legation.
टेक आज दी स्ट्राटेजी तमर लिवरेज नियाजिवो देन ग्लोबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड और साइबर सिक्योरिटी अलायंस उपर ध्यान दियाजिवो से जो तमर राइजना साइंस इनिशिएटिव न्यू दिल्ली तमर हेल्ड होता फ्यूचर कोलाबोरेशन वाइज तमर एआई एथिक्स ऑफकोर्स तमर लीडिंग द ग्लोबल टॉक्स ऑन द रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट एआई एथिक्स बोले ये एथिक्स को भलो यूज करिवो कारण एआई रो तमर चैट जीपीटी टाइप रो तकर आईक्यू देखले ईक्यू देखले इमोशनल इंटेलिजेंस इज 86%। तो ये आमठू बेटर डिसीजन नहीं पारिबो सेमीकंडक्टर एस्टाब्लिशिंग द सप्लाई चेन सिक्योरिटी विथ द G7 partners and space diplomacy shared the lunar and the Martian research protocols with the ISRO। 2026 रे तमर जो सस्टेनेबल लैंड माने कौन रिपोर्ट आसी द यूएन हैज डिक्लेयर्ड द 2026 द इंटरनेशनल ईयर फॉर द रंगलैंड एंड द पास्टोरल्स लिस्ट ए जो माने पास्टोरलिस्ट जोड़ा के सब बुलंती। The initiative aims to protect the livelihood of 500 million people who depend on the grazing lands while promoting the biodiversity and the climate resilience in the arid region। एथिपाई तमकर ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्शन दिया हबो तम रेंगलैंड रिस्टोरेशन हबो आउ ग्लोबल पॉलिसी किछि अडॉप्ट करा हबो ए सब जिंस पई कि सेमाने जो माने सब चरौचंदी सेमाने पनि बंचिबे ना बट सेमाने केमिति बंचिबे तमर यूनिवर्स माने हमर एनवायरनमेंट सहित खाप खुई दी आज 4.4 सॉरी दैसेस 4-1 रे कोन विक्टरी हिच दी ऑस्ट्रेलिया सिक्योर्ड द यूआरएन विथ ए 5 विकेट विन इन द इंडिया फाइनल टेस्ट एटा तमर ये न्यूज बेसी किछि इंपोर्टेंट नाही तो दरकार नाही। अच्छा एतिक तमर मेन केते केतेटा बड़ न्यूज आज थिला तमर जेमति 69 टा 66 66 टा मल्टीनेशनल ट्रीटी रु तमर यूएसए एग्जिस्ट करिछि प्लस तमर यूएसए तमर इंडिया उपर 500% रो टैरिफ लगेबो जदि मार्च सुधा से तार ट्रेड इम्बालांस को ठीक करी न पाइला देन तमर रशिया कथा हमें देखिले कि रशिया तंकर केमती एबे माने ट्रेड उपरे माने कौन आत्मनिर्भर होची कि एबे से इंडिया रो S-400 जो तार हेलिकॉप्टर दबार थिला तापर प्रेशर आसुची चाइना रो ट्रेड प्रेशर पडुची ए सब जिंस हमें देखिले आज न्यूज रे पुणी काली देखा।